it's all the matter of how much experience do you have in a particular niche, or maybe how confident are you to get results into a particular niche, and that is why we require a niche solution. Now we would basically help you in selecting the best niche possible for you, and then we'll create an ICP around that. Once that ICP has been made, then we'll move to offer creation. I would say 80% of the acquisition success, in terms of client acquisition success, is totally dependent on how good your offer is. If you don't have a good offer, it, it, it becomes very hard for you to scale in your outbound system or maybe a paid ad systems. Because what I think is outbound is just like personalized ads. You can choose who you want to target via lead list and scraping all of the leads and everything on that stuff, and then show them the offer. That is what outbound really is, and you just do that do that at scale via paid ads. So if you don't have a good offer, like your outbound and paid ads won't work. And inbound has been working for you, but I would suggest some tweaks onto that as well later on. But yeah, this is like the 80% responsible factor for a good acquisition success. Now here, for example, if I show you our guarantee that we guarantee you 20 clients in the next 180 days, and if you don't get that, we'll do 100% refund. Now this offer has a psychological element of risk reversal in it. For example, let's say someone goes ahead with the program, and if he doesn't get 20 clients in the next 1 days, he get 100% refund. I have 23 other psychological elements that we can implement into your offer to make it more irresistible to the market. Once we have created this offer, then we'll move to increasing the pricing. Right now, you're charging somewhere about $600 as an average for each client. What what I can show you tons of examples for our clients. You can go onto our website and see the testimonial results, all of that. But instead of that, I will show you my example in just a minute. We have been able to close almost like 2 days back or 3 days back, I don't really remember. We closed a client for like $1,500 as in base fee, and then 300 or $400 for qualified appointments. So this is the model that we follow for ourselves as well. Now, to make sure that you have this dialed in and you can actually close the people at an 1500 and plus qualified appointments model, you need to have a great offer and niche. That is what I'm going to show you later on the call. This whole process of niche offer and pricing would be done in the next 10 days. So let's say if we get ahead, it would be 10 days. And in those 10 days, I want you to give almost 2 hours a day. And in those 2 hours a day, I want you to do 3 things. Go ahead and fill up some docs for us. Watch some of the videos that we give you, and sit on live calls with us. These are the 3 things that I want you to do. And this would take somewhere about 2 hours a day from you, and you need to do this for the first 10 days. After that, your time investment will be significantly less, but initially it has to be this. Right? Does that make any sense for you? Yeah. Do you see this offer? What is your current offer that you're pitching to people? I think my current offer is quite generic in nature. Sorry? My current offer is quite generic in nature. Generic in nature, exactly. See, let's say because those companies like in the US get tons of emails with the same generic offers, right? And if you want to stand out, you have to focus on offer, and that is what exactly will be helping you out with. This is why instantly just to show you. Yeah, I think here these are all of our clients. If I click on my campaign, let me see. Yeah, we just closed a PPC company. Here, yeah, we sent out this email. We did this. We basically offered them a trial, but when they hop on a call with us, they really like the process that we take people with. And then we send them a food payment link. They are paymenting, they have already paid almost like $1,500 per month, and 300 for every qualified appointment on the calendar, to be paid bi-weekly. And yeah, he is currently on our Slack as well, so we have started the whole procedure for him as well.
And we can do again the same thing for you as well. You as well. So you do And email marketing. sorry, You do email marketing. not email marketing. So yeah, it's kind of email marketing, but we have like some sort of systems that we go with. I'll talk more about it later. Okay. Yeah. So I'm coming to that only. So this is the pillar two. This is all about appointment booking. Here we have three major systems, which is outbound, inbound, and paid ads. Now, paid ads would be something that I wouldn't recommend to you right now because it would need two things. It would need proof of concept and it would need ad spend. Right now, the ad spend in US currently to gain any sort of traction and any sort of good results or tangible results would be somewhere about $300 a day. And for proof of concept, we would need to validate our offer via outbound or inbound systems, and that is exactly what we are going to do in this roadmap that I'm going to tell you. So in the first system, which is outbound, again, cold calls or bulk SMS wouldn't work for you. I've tried that multiple times. People just ignore it. Yes. What we would be focusing on would be emails and DMs. Here we would be sending almost like 1,000 emails a day, and for that, like the tools cost and everything of that sort would be somewhere about 40K per month. So we would need to buy domains, email, make sure that we have enough mailboxes to sustain a good deliverability rate, because we are sending almost 1,000 emails a day. Once we have this achieved, the KPI that you can expect would be somewhere about 10 to 12 meetings every single, like almost 20 to 25 days. We would be able to get like 10 to 12 meetings from that. And yeah, that is the KPI that you can achieve from cold emails and DM systems. So and yeah, this campaign we all launched very recently. As you can see, it's like 10th of June, and on 16th June we are already, like we have already closed the client and we are ready to move forward with them at of course like a 1,500 base payment and one more on the qualified appointments. We can again do the same thing for you as well. We would just need to change the marketing angle and offer and everything on that, so that you would help us out with. And they'll basically impart this knowledge to you so you can run the system by yourself as well. This is all about the outbound system, and if I go over into the inbound, here we'll help you with YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. These two are text-based models, and these two are video-based systems. And if I talk about like inbound system, we will show you like what to post, how to come up with an idea, everything of that sort. Give you the exact content calendar that you would need to follow. Once you have that, it would take you 8 weeks to see any tangible results. And after 8 weeks, you can easily get like 2 to 3 appointments every single week via inbound. If you again can do it consistently for 8 weeks. But since we don't want to we don't want to wait till 8 weeks and see some results. So that is the reason why we come up with outbound system to give some quick validation, quick cash, so you can basically spend that on like inbound systems, paid ads, and all of that things later on. That is how we would generate proof of concept with these two systems, and then of course you would have enough ad spend, and then we'll scale the whole thing with paid ad systems. This is going to be my like roadmap for you and how to scale. Do you feel like this makes sense? Or do you have any I questions? have I have quick questions. Like Yeah. for the outbound system, you told me that like we need to spend 40K per month. That's fine. I understand that part. Um, and what about the cold DMs? To whom you wanna do cold DMs and how? Yeah, so we would be using LinkedIn for that. Instagram and everything on that sort doesn't work. Like people, and I think there was some recent update almost 2 months ago, which literally killed like the cold outreach system for Instagram. It just all goes on to spam and not required tabs. So it's better that we use LinkedIn for that. For LinkedIn, we use like Sales Navigator, we've got some tools as well for automating the procedure. And yeah, you can just set on the campaign, get the offer right, get the messaging right, and you would be booking calls. If I show you our this thing, I think yeah. So in May we like sent out almost 600 people. We got 4 appointments booked from it.
That's an appointment booking rate of 1%. So I mean, like 0.8 to 0.4%, and the conversion rate would be 1%. So things are working pretty well for us right now, and that is why I'm on this call trying to uh, try the same thing for you as well. Hmm. And what about the inbound? So you only help with the scripting in the videos, or you also get it shoot and then you also edit it No, and then. no, we are the consultation firm, and plus, like, what we personally do is that we give you the framework, we give you the resources, we give you the systems that you would need to do. But the actual work has to be done. So I have to do the editing part as well. Yeah, Okay. but we have to make it in the sense that it won't take like a lot of your time. That is like the whole system is designed towards that you need to spend, let's say, a day per week on content, and that would be it. You can make like a whole weeks of content on that day, and we have and that is the reason why we made this content calendar, so people can save up a lot of time and have a proper system that is guiding them to get more traction onto their socials. Got it. One last Yeah. question: how do you get the leads, the data to send out emails? Yeah, we have multiple databases already. We have two guys in like Philippines and Bangladesh. They help us with the extraction process. We basically take them to the intent signal and then nurturing all of that things. So you use So the tools there's like a whole Apollo. sequence. Sorry, You use tools like Apollo. Apollo is one of them. Then we have GetLanka. We have like other like of course sales and get leads. We have and we have store leads. There are multiple things that we can use. Okay. So we need to see what would work best for you when we are actually building that niche and offer. Okay. That is the reason why I said that once we select the niche, we'll be making ICD. And out of that ICD, we'll create the exact lead list that we want to make. Hmm. Okay. Got it. Yeah. Yeah. So, I mean, what do you think about it? Do you feel like this is something that could help you? No, I'm not sure because I have not seen any results so far. You just showed me just one email, that's it. So I don't think so that like I have got enough Yeah, results. I can, if you want, I can show you more as well. So this is like Raghav Mittal's campaign. He is also targeting internationally. If I show you, yeah, these are all people from his niche, and I think he's targeting loan officer and purely who are purely working off referrals, and he's guaranteeing them something. So This how is many, yeah, how many emails you send in how much time, and then how many leads you got, how many he said, bookings you got, yeah. yeah, all right. So he sent out almost 2,300 emails up until this point. If I show you his responses, just a second. I think there's some glitch here. Yeah. So he is getting, let me see, most of them are out of office. Then we have this campaign 24th April. I think he has segregated all of that. So basically, once you get the reply, you need to mark it as either like it is interested or it is not interested. So I think he hasn't marked it yet. No worries. Uh, So you mentioned to me that like you will send out 1,000 emails per day, but for Raghav you send out 2,300 yet till now. Not till now. So if you see the campaign again, Hmm. yeah, just a second. Last 4 weeks. Yeah, so we started this out at 23 April. We did this till May 13th. So this is like the whole campaign one. So how many emails got sent? Yeah, he sent almost like, let me show you. 200 email पर डे जा रहे हैं ना ये तो मोटा मोटा. Six, no, the daily limit is 600 emails per day. हाँ तो मतलब वही ना वो 2,300 email ही sent हुए ना अभी तक. Yeah, but उसकी volume कम थी ना. He had opted for a lower set of infrastructure. So it's all the matter of infrastructure जो आप Got it, set got करो. it. अगर तो आप ज़्यादा कितनी emails लोगे, आप ज़्यादा emails लोगे, मतलब do it you will have be an like idea कितनी lower. meetings book हुई इसकी out of 2,300?
Sorry. Do you have any idea how many meetings he actually booked out after sending 2300 emails? ट्रैकिंग वो कर रहे हैं, तो जैसे मुझे उनकी ट्रैकिंग शीट मिल जाए, अच्छा, वो भी ठीक दूंगा, है. बट या एनी मैं एनी अदर एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि चलो नीश ही बदल गई पूरी. कोई मार्केटिंग एजेंसी का एग्जांपल. मार्केटिंग एजेंसी शो. सो ये है, आई थिंक ये भी मार्केटिंग में ही है. यप, ये भी मार्केटिंग में है. एंड इनके लिए हमने एक दूसरा फॉर्मेट ट्राई किया था, इन विच वी बेसिकली सिलेक्टेड अ लीड. जस्ट एक सेकेंड. बेसिकली व्हाट वी डू हियर इज दैट हम लोग एक वीडियो अटैच करते हैं उनकी वेबसाइट के साथ इन द बैकएंड. इफ आई शो यू एन एग्जांपल ऑफ दैट कि वो कैसा दिखता है, अगर आप इन्हें जानते हो बाय चांस. या आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ऐसा कुछ दिखता है पूरा ईमेल, in which we basically have our offer, and then we include a loom here, loom on the video here, and it has let's say Vedika's website in the background. Now once someone clicks on it, they'll be landed onto a like landing page, जिसमें it would be a loom video, and it would be basically consisting of what you can like help out with the client, and what our core offer is. Once we have like once the client knows this, and if he or she likes it, they can book a meeting right through this button here. They would be landing onto the calendar. This is the funnel that we follow for. So there are multiple like sub funnels that we can do in terms of email marketing. तो So इस एजेंसी के लिए कितने ईमेल सेंड करें, कितनी मीटिंग्स बुक हुई? आप एक बार ना वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर we would get some better idea. I'll show you. You would go onto this like down यहाँ पे एकदम हमारी साइट पे जाके if you go at the code, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे लोग बता रहे हैं about their results मिलते हैं. चलो ठीक है, I'll check it out. आप देखें ना. हम्म. Yeah, so this is the whole thing. And then once you get like these meetings, almost 10 to 12 meetings in the next 20 to 25 days, that would be somewhere about 2 महीने में it would be somewhere about 20 to 24 meetings. Now उसमें से let's say अगर आप 12% को भी convert करते हो, you still would be able to get like 2 to 3 clients minimum from the US on the new offer and the new pricing that we are dealing with you. Now इस case में once you are converting at 12%, I don't want you to convert at 12%, so we'll help you out with getting a conversion rates to 30%. To do that, we have a sales framework that I want you to use, and once you use that, your like, with the conversion framework and the sales conversion rate would be instantly getting up to 18 to 20%. And once you do that, उसके बाद I want to do call reviews with you, in which let's say आपकी कोई भी calls आ रही है उसमें क्या गलत हो रहा है, आप वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हो, that is what we can schedule out for you, and उसके हिसाब से you can make changes onto your script or maybe your framework or maybe your tonality, and उसके बाद में you can instantly get up to 30%. Once you do that, once you are at 30% of sales conversion rate, I want you to focus on hiring. So we have a whole like hiring process in which we basically give you closers, give you the exact framework that you would need to follow in order to hire a good closer at least 12 to 30% commission basis. Okay. And we'll give you the exact recipe जो आप इसको train कर सकते हो उसमें. Okay. Yeah, so this is all done by us in terms of like giving SOPs and hiring instructions all of that. And just to wrap it all up, we'll have support. Just for the first 3 months, you would have weekly one-on-one calls with the person who is assigned to you, which is our CSM. Now, like this CSM has scale companies from like 10 lakhs a month to 15, 10 to 20, 10 to 30, all of that. So he knows, he's quite experienced, and he knows how the campaigns work and how what to change in order to see results. So you'll have weekly one-on-one calls with him, and after the first 3 months, when you are very confident, when you are very confident with the
email campaign, all of the inbound systems they had, then it would be bi-weekly calls. So in every 14 days, you will have one-on-one calls with the guy. In terms of support, you'll have Monday to Friday, of course, like Slack or WhatsApp, whatever supports for you. You'll have unlimited chat with support on that. So this So is like, this is basically done with your system and not done for you. no, it's not. It's not done for your system. Okay, done with you. ठीक है. तो इसमें what are the charges? Yeah. So charges would be, tools cost would be somewhere about 40K per month. And what we charge is a one-time consultation fee for 1.5 lakh rupees for 6 months. 40K per month plus 1.5 lakh rupees for 6 months. मतलब मोटा मोटा हो गया ये 2,40,000 प्लस 1.5 लाख, मोटा मोटा 4 लाख रुपए हो गया 6 महीने का. और इसमें यू आर गिविंग मी We are giving you the guarantee 24. that you use 20 claims in the next 180 days. और अगर हम इसमें एड्स इंक्लूड करते हैं तो इसमें एड्स की कॉस्टिंग तो मेरी हो जाएगी, मगर मैनेजमेंट आपका हो जाएगा. Management in the sense, मैं समझा नहीं. एड्स रन करना एंड ऑल्सो स्टफ. स्टॉप मतलब वो आज स्टॉप कब करना है, रन कब करना है, वो सब की जो भी. हाँ मतलब कंप्लीट एड वाला वो आपका होगा या वो भी हमें करना है? नहीं, वो हम करेंगे. वो आप हमसे पूछोगे कि अब मतलब यहाँ पे रोकना है, यहाँ पे बंद करना है, तो हम लोग बताएंगे कि अब आप वो. अच्छा मतलब आप एड सेटअप नहीं करोगे, यू विल ओनली गाइड इनटू दैट पार्ट, या. है ना? और ईमेल मार्केटिंग में भी आप प्रॉपर सेटअप नहीं करोगे, यू विल गाइड मी. या. तो मुझे ऑफर वॉफर सब खुद बनाना है. या. पर ऑफर के लिए आपको क्या ऑफर बनाना है, मतलब उसमें जो भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी या जो भी आपको डिस्कस करना है आपके नीश के बारे में, ऑफर के बारे में, वो आप हमसे कर सकते हो ऑनलाइन कॉल्स के साथ. और अगर कॉल्स नहीं आती है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल ना. कॉल्स नहीं होती, मैं समझा रहा मतलब कॉल्स अगर नहीं आती है, हम अचीव नहीं कर पाते हैं टारगेट, हूँ. तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? या ऑफ कोर्स, लाइक अगर आपने सब कुछ किया जो मैंने आपको बताया, तो ऑफ कोर्स आई मीन आपको कॉल्स आएगी. अगर नहीं आ रही है तो ऑफ कोर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी गिव दिस गारंटी कि एटलीस्ट एक रिस्क एलिमिनेट हो जाए. ओके, गॉट इट. और आप डन फॉर यू सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते? वो भी करता हूँ मैं. अच्छा, उसका क्या फॉर प्राइस है? एग्जांपल, लेट्स से अगर आपने सब कुछ किया और आपके पास अच्छे टाइम नहीं है, या यू वांट अस टू हैंडल एवरीथिंग, तो इन दैट केस वी कैन बी डू डन फॉर यू, जिसमें द टूल कॉस्ट रिमेन्स द सेम 40K per month, and we charge 50K per month. डबल प्राइस हो गया बेसिकली. Almost, yeah. 1.5 लाख का सीधा 3 लाख हो गया ना 6 महीने में. ओके. और डन विद यू में यू टेक ऑल द पेमेंट इन वंस और इन पार्ट्स? We do take all the payment in advance, so it's like a one time. वन टाइम पेमेंट. अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम हाफ पेमेंट करके कर लें? डिपेंड्स कि मतलब आपको कब चालू करना था, और नॉट आल्सो डिपेंड्स. अगर आप जैसे मेरे पास बहुत अभी कल ही एक बंदा था, ही सेड कि आई वांट टू स्टार्ट इन ऑलमोस्ट लाइक जुलाई or July end, and I wanted to break this down for me, and I mean I simply said no, because we won't be able to hold this pricing for that long. So if you like, when do you want to start? यार मतलब आई स्टिल हैव अ क्वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे मतलब ऑन दिस कॉल आई गॉट योर सिस्टम आइडिया, मगर टू गेट थिंग्स स्टार्टेड आई थिंक आई एम नॉट कन्विंस्ड येट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी जो रिजल्ट्स मेरे को देखने थे वो आई हैव नॉट सीन दैट पार्ट. क्योंकि मैंने यार ये सुना है कि ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग दीज डेज. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल who are sending out 10,000 emails, 5,000 emails a day, and they have just bombarded their system. तो अब उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. पहले आते थे नो डाउट. Why do you think that happens actually? क्यों मतलब उनको उनकी पाँच यार emails मतलब मैं दे रहे अभी हो? उस कन्वर्सेशन में तो मैं नहीं जाना चाह रहा. दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट दैट इज़ देयर.
बट द ओनली थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट इज़ कि मतलब आई हैव सीन योर एड्स, आई थिंक आपकी ऐड 2 सालों से चल रही है, राइट? ऑलमोस्ट आई गेस 1 साल से चल रही है। 1 साल से। तो मतलब अगर एड्स चल रही है इतने टाइम से, तो यू गाइज माइट बी क्लोजिंग अ लॉट ऑफ लीड्स, अभी प्रॉफिटेबल हो रहा होगा, वरना तो Yep. ऑब्वियसली नहीं प्रॉफिटेबल ये चीज़। हम्म। तो अब मतलब वही है कि अभी जैसे मुझे ना क्लाइंट्स वाला एक सिनेरियो समझ में नहीं आया। अच्छा, बाय द वे, अभी आपको एक लीड कितने की पड़ रही है यहाँ पर, द पर्सन हु बुक दिस कॉल? मतलब आप क्यों पूछ रहे हो? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस सिस्टम से आपने अब तक कितने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं और कितने लोगों को रिजल्ट आया होगा, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे अभी नहीं समझ में आ रही है, तो वही मैं थोड़ा डिकॉड करने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब आप मुझसे पूछे ना, आपको इसमें डाउट है कि हम लोग इस सिस्टम से जो हमारा रोड मैप है कि नहीं, मेरे को डाउट नहीं है यार, देखो सिस्टम आपका सही है, आई एम नॉट डाउटिंग दैट पार्ट, ठीक है। क्योंकि लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि यार उनको ना, मतलब वो बोल देते हैं, देन दे डोंट नो कि हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। आपके वाले सिनेरियो में वो नहीं है, अब हम सिस्टम है, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल रील द रिजल्ट्स। अब वो हो सकता है कि किसी क्लाइंट को 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी क्लाइंट को 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता, तो दैट आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मार्केटिंग एजेंसी थिंग, ठीक है, तो वो तो आई एग्री। बट द ओनली थिंग दैट आई एम राइट वांट टू नो इज़ कि मतलब कितने लोगों के, मतलब मार्केटिंग एजेंसीज में क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसी फील्ड है यार जो सेचुरेशन पॉइंट पे है इस समय, और एआई के आने से तो और भी ज़्यादा सेचुरेशन पॉइंट पे आ रही है। तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने कितने क्लाइंट के साथ वर्क किया है अब तक, और उनका क्या रिजल्ट्स रहा है, कितने लोगों ने ये 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये प्लस 40,000 रुपये महीना, मतलब मोटा मोटा 4 लाख रुपये तो यही हो गया। तो 4 लाख रुपये अगर 6 महीने बंदा लगा रहा है, तो वो कम से कम बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा होगा यार, मोटा मोटा 3x तो मान ही लो, वर्स्ट कौन सा? केस में, है ना। वरना 4 लाख का 8 लाख तो एटलीस्ट हो ही जाए, क्योंकि उसकी अपनी कॉस्टिंग भी है। 4 लाख तो उसने आपको ही दे दिया है खाली खाली। अब उसके बाद उसकी अपनी कॉस्टिंग भी है, उसको डिलीवर भी करना है प्रोजेक्ट, तो अगर वो डबल भी करता है वो उसको, तब भी उसका रेवेन्यू नहीं जस्टिफाई कर पाएगा उसके प्रॉफिट को। नहीं कर पाएगा। तो 12 लाख तो कम से कम उसको चाहिए ही चाहिए वहाँ पर। तो वही हम्म। मैं एक चीज़ आइडेंटिफाई करने के चाह रहा हूँ कि मतलब कितने क्लाइंट से आपने वर्क किया, क्या उनका रिजल्ट रहा, कितने। मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आपको मतलब मैं अगर आपको कुछ भी भेजता हूँ लाइक हाँ, मेरी साइड से, तो आपको क्या लगता है वो क्या बोल रहा होगा? क्या बोल रहे हो इन द सेंस? लाइक उसको रिजल्ट्स आ रहे होंगे, मैं आपको वही हमेशा टेस्टिमोनियल भेजूंगा, राइट? हाँ, मतलब ठीक है ना, वो तो सब यही करते हैं, अपना फेलियर तो कोई भी नहीं दिखाता है यार। एग्जैक्टली। तो मतलब उससे आपको कुछ भी जो आप ढूंढ रहे हो लाइक विच इज सर्टेनिटी, वो वहाँ पे नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ। अगर मैं आपको कुछ भी मेरे साइड से दिखाता हूँ, बिकॉज मैं आपको कुछ भी दिखाऊंगा वो एक बायस रहता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। चलिए, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो कैंपेन्स नहीं चली, और जो मतलब जिनके जिनके रिजल्ट्स नहीं है, उन लोगों ने क्या क्या गलती की, ओके। राइट? ठीक है। अब जिन लोगों की कैंपेन्स नहीं चली, उनका मेजर इशू यही था, आपको यहाँ पे समझाता हूँ, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिडंट फोकस ऑन डिलीवरेबिलिटी। कि मेल स्पैम में जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो सब एग्जैक्टली। बेसिकली, उन ठीक है। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया वो चीज़ की, मतलब ईमेल्स और डोमेन्स की हेल्थ कितनी मैटर करती है ऑन एन बिगर स्कैम लाइक कैंपेन लाइक दिस, जहाँ पे हम 1,000 और 5,000 ईमेल्स भेज रहे हैं हर दिन के। अगर आपका एक दिन भी मतलब थोड़े बहुत लोगों ने भी स्पैम में मार्क कर दिया, दैट इज ऑल, उसके बाद वो डोमेन्स खत्म। सो वी प्रोवाइड यू विद लाइक इन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप इजीली रीयूज कर सकते हो डोमेन्स मच बेटर। तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा हर बार गॉट और इट। सेटअप एवरीथिंग ऑफ दैट। सब ठीक है, ये गॉट इट, मेन गॉट चीज इट। थी डिलीवरी। सेकंड, अगेन मैंने जो आपको बोला ऑफर, अगर आपके मतलब आप लोगों के पास जा रहे हो दिखाने कि ये मेरी चीज़ है, और वो लोग देख भी रहे हैं बिकॉज डिलीवरी अच्छी है, बट अगर आपका ऑफर ही नहीं है ना, मतलब ढंग का, आप वही जेनरिक ऑफर्स लेके जा रहे हो अभी तक, तो इट वोंट स्टिमुलेट देम। गॉट अगर इट। अगर वो लोग अगर अगर आप उनको कुछ ढंग का एक्शन वही नहीं दे रहे ऑफर, तो दे वोंट स्टिमुलेट, दे वोंट क्लिक ऑन योर थिंग, एंड अगेन इट वुड जस्ट शो कि बस ईमेल गया है, दैट्स इट, नो रिजल्ट्स, नथिंग। आपने देखा होगा, आपने खुद भी मार्केटिंग एजेंसी चलाकर लाइक यू सेंड आउट ऑलमोस्ट 5,000 10,000 ईमेल्स अ डे एंड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, जीरो रिप्लाईज। व्हाई डू थिंक दैट हैपेंस? बिकॉज उनका ऑफर अच्छा नहीं होता है, या तो उनकी डिलीवरी अच्छी नहीं होती। एंड अगर आपके आउट ऑफ ऑफिस जा रहे हैं कुछ भी है, तो दैट मीन्स डिलीवरी इज गुड, एटलीस्ट ईमेल्स आर लैंडिंग। उसके बाद में इट ऑल बिकम्स ऑफर स्क्रिप्ट एंड हाउ यू स्ट्रक्चर द होल थिंग। गॉट इट, गॉट मैं इट। आपको मैं आपको ऑफ कोर्स क्लाइंट्स की स्क्रिप्ट्स वगैरह से नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको ये बता पाऊंगा कि हमने क्या किया था, उसकी वजह से हमने क्या उम्मीद देखा है। आप हमारा रिप्लाई रेट देखोगे, इट वुड बी समवेयर अबाउट
0.8% समथिंग लाइक दैट, विच इज़ गुड. अगर आपका 0.5 से कम है, दैट मीन्स कि योर ईमेल्स आर गोइंग इन स्पैम. मैं चाहता हूँ कि मैं वो सेम चीज़ आपके लिए रेप्लिकेट करूँ, बिकॉज यू आर particularly trying to do the same thing. तो यार आपकी भी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है ना, Yeah. तो डेटा ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि हम और आप सेम नीश में हो गए. डेटा है, बहुत डेटा. आई टेल यू. सो आप आपने देखा भी होगा, लेट्स से अगर मैं एक लिस्ट वन है, उसमें 3,000 लेट्स से 30,000 लोग हैं, ठीक है. मैं उन सबको ईमेल भेजता हूँ फ्रॉम माय साइड, मेरी कंपनी के थ्रू, राइट. एंड लेट्स से अगर हम लोग एक और लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट टू, जिसमें लेट्स से 40K है, उनको आप टारगेट करो, आपकी कंपनी टारगेट करे, ठीक है. उसमें अगर इन दोनों लिस्ट में थोड़ा सा ओवरलैपिंग सेगमेंट है, लिस्ट थ्री निकालते थे जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 15K या लेट्स से 10K है, ठीक है, ओवरलैपिंग सेगमेंट. तो उनमें से बहुत लोगों ने कभी भी आपके मेल्स देखे ही नहीं होंगे, फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि भले आपकी डिलीवरेबिलिटी ऑन पॉइंट, आपका ऑफर ऑन पॉइंट है, पीपल जस्ट गेट बिजी. तो वो एक फैक्टर हमेशा रहता है. तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि मतलब आपने जो भी मेल भेजा है वो उनके पास कभी गया ही नहीं है, और दूसरी कंपनी से जाके टारगेट कर सकती है. अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अभी आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो एंड देन यू आर इनवाइटिंग एजेंसी ओनर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आर यू ऑल्सो रनिंग दिस सिस्टम फॉर योर एजेंसी? क्या मैंने आपको वही तो बताया अभी, अच्छा, वो एक FFC एग्जांपल वाला. जो आपने दिखाया था. तो आपने अपने लिए कितने ईमेल्स सेंड किए और कितनी कॉल्स बुक करी? मैं आपको बताता हूँ, हमने रिसेंटली ही चालू किया है ये. एक्चुअली टेंशन है, हमारा लिमिट है इसमें भी, लीड्स ऑलमोस्ट है 7.8 के, जिसमें से अगर मैं आपको एनालिटिक्स बताऊँ, या यहाँ पे देखिए, आप जैसे देखिए जून 11 हज़ार ईमेल सेंड, जून 12 हज़ार ईमेल सेंड, यहाँ पे 2 दिन सैटरडे संडे ब्रेक, जून 15 2,000 ईमेल सेंड. 2,000 क्यों? बिकॉज वी इंक्लूड फॉलोअप्स एज वेल. तो अगर आप यहाँ की डेली लिमिट गॉट देखोगे, इट. इट वुड बी 2,000 मैक्स न्यू लीड्स इफ तो यू इसमें से गो. आपको रिप्लाईज तो चलो ठीक है, वन थिंग हो गया. लीड्स कितनी बुक हुई, कैलेंडर्स कितने बुक हुए? I mean, we just like close the client in 6 days. अगर आप देखो कि 10 ऑलमोस्ट मीटिंग्स में था यहाँ पे, क्या है, अभी कल रात की बात है शायद. यहाँ मैंने जून 16 7:43 AM हमने उन्हें मैसेज किया कि हे जस्ट आई सेंड द इनवाइट फॉर द सेम थिंग, और इनका रिप्लाई आया था, आई टेल यू कहाँ पे, I would be available to do tomorrow at 10:30 AM